Yeah. Now, the chapter which I had explained you how daddy was always late, we can have some points and we can summarize this chapter. So, we can write the point. Daddy becomes late always. Daddy's parents couldn't do anything for this habit. Grandma tries to wake him up on time, but he says, वो क्या बोलते हैं? Wait a second. Wait a sec. Shortcut है second का wait a sec. Grandparents ask him to complete his homework, but he continues to read another book. He doesn't like course books. Daddy completes his work late and does improperly. Daddy doesn't know what's going on in class. Yes. Okay. Friends make fun of his habit. So these are the points through which we can summarize the chapter and we come to know actually what is there in the chapter. Okay, and author is Alexander. You should have the knowledge of the authors also. You should know something about the author or poets. So in the end of the
chapter, some 2-3 sentences are written about the poets or authors. So you can go through them and come to know about them. Now we can continue the exercise. First, there are glossary, means some difficult words are in the chapter and you can have their meanings in glossary. Okay, and how can you form your glossary? You can read the word, you can come to know the meaning as it is written in the book, and you can use that very day that word in 2-3 sentences, so that you can have a firm grip on those new and difficult words. So उससे आपकी इंग्लिश भी improve हो सकती है. So moving further, there is choose the correct answer. So there are some questions. The first one is, little daddy was different from all the other children because, and the options are given, they all came to school before the bell rang, they did not read books, little daddy was always late for school. Because why other children are different from daddy? Because daddy was always late for school. This one was the appropriate option. Now moving to second one, this is not the reason why the grandparents would lose their patience with him. अब ऐसा कौन सा रीज़न नहीं था जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स अपने पेशेंस को खो देते? वो कौन सा रीज़न नहीं था? He wouldn't keep the book down, he wouldn't do his homework, he would weep. अब उनका पेशेंस कहाँ खत्म हो जाता था? When he would weep, जब वो रोना स्टार्ट करते थे. Now third one is, he did his homework in a daze. वो अपना नींद में ही होमवर्क करते थे because he was feeling sleepy. He wanted to finish it fast. His parents scolded him. So the very first is, he was feeling sleepy. Now next exercise is, here is a table showing cause and effect. It shows why little daddy did not do well at school. इस टेबल में मालूम पड़ता है कि डैडी अच्छी तरह से क्यों परफॉर्म नहीं करते थे स्कूल में. अब मिसिंग स्टेटमेंट्स हमको लिखने हैं. लेफ्ट साइड कॉज एंड राइट साइड इफेक्ट है. फर्स्ट वन आई एम टेलिंग यू, लिटिल डैडी डिड हिज होमवर्क एट द लास्ट मिनट. ये रीजन था. अब इसका क्या इफेक्ट हुआ? सो द होमवर्क वाज नॉट प्रॉपर. ओके, या आप लिख सकते हो होमवर्क वाज इम्प्रॉपर, कुछ भी लिख सकते हैं. सो फर्स्ट वन वाज द कॉज एंड सेकंड वाज इफेक्ट. सो रेस्ट टू यू कैन डू बाय योरसेल्फ. ओके, अब सेकंड में इफेक्ट लिखा है, ही वाज लेट फॉर स्कूल. अब वो लेट क्यों होते थे उसका रीजन आपको लेफ्ट साइड में कॉजेज में लिख देना है. ठीक है. द सेम वे यू कैन हैव थर्ड वन, ही ऑफन मिस्ड द टीचर्स एक्सप्लेनेशन ऑफ अ न्यू सब्जेक्ट. क्यों वो मिस कर देते थे? वो आपको इफेक्ट बताना है. मतलब जब उनकी एक्सप्लेनेशन मिस हो जाती थी तो उसका क्या असर होता था डैडी पर, वो आपको लिखना है. नाउ vocabulary में fill in the table with related words. The first one has been done as an example. इसके लिए आप लोगों की बेसिक ग्रामर भी काफ़ी फर्म होनी चाहिए. जैसे कि इसमें टेबल में हेडिंग्स हैं नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. सो वन आई कैन डू फॉर यू. ओके, टेबल में फर्स्ट नाउन, देन वर्ब, then adjective and adverb. ऐसे कॉलम्स बने हैं. तो फर्स्ट इज ऑफेंस. ये है आपका नाउन ऑफेंस. ओके, इसका मीनिंग होता है अपसेट. ठीक है. अब दिस इज नाउन फॉर्म. वर्ब फॉर्म होता है ऑफेंड.
एक्चुअली तो हम इसको टू ऑफेंड बोलेंगे तब प्रॉपर वर्ब फॉर्म बनेगा, बट दैट इज ओके एज इट इज गिवन इन योर बुक। ओके, तो हम आप लोग ऐसे ही करेंगे। अब इस एक वर्ड के चारों फॉर्म लिखने हैं, ठीक है। वर्ब तो होता है कुछ काम करना, एक्शन वर्ड तो ऑफेंस का वर्ब फॉर्म ऑफेंड हो गया, एंड देन नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। नाउ एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करने वाले, उनको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। अब इसका डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफेंस का, ऑफेंसिव, ऑफेंसिव इवेंट, मतलब अगर इस वर्ड के बाद आप कोई नाम लगाओ तो आपका समझ में आने से कि ऑफेंसिव मूड, ऑफेंसिव इवेंट, ऑफेंसिव क्राइटेरिया। सो दिस इज एडजेक्टिव बिकॉज इट इज एक्सप्लेनिंग एंड डिस्क्राइबिंग नाउन्स। नाउ एडवर्ब, एडवर्ब में इट इज ऑफेंसिवली। एडवर्ब मतलब वर्ब में कुछ, वर्ब के मीनिंग में कुछ ऐड करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको एडवर्ब्स बोलते हैं। वो सब आपने शायद सीखे ही होंगे, मैनर एंड ऑल, मैनर, डिग्री, नंबर। नाउ और भी हैं वर्ड्स, डिफरेंस। एक और मैं बता देती हूँ, रेस्ट टू तो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। फर्स्ट इधर यहाँ है डिफरेंस। अब उसका वर्ब फॉर्म है डिफरेंशिएट। एडजेक्टिव है डिफरेंट, हम बोलते हैं ना डिफरेंट बुक, डिफरेंट पीपल, सो एडजेक्टिव। एंड एडवर्ब है डिफरेंटली। यूजुअली एडवर्ब में ly वाले वर्ड्स लगा के वो बनता है, लेकिन हर बार ऐसा हो ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार ly वाले वर्ड्स लगाकर ही एडवर्ब बने, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस। सो टू आई हैव डन, रेस्ट टू यू विल डू। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, fill in the blanks with suitable words from the completed table। अब ये जो आपने टेबल कंप्लीट करी है उसमें से जो suitable words हैं वो आपको लिखने हैं। फर्स्ट टू मैं बता देती हूँ आपको। She was upset about his dash words। किस तरह के words? Offensive words, but was willing to forgive the offense। लेकिन अपने offense को forgive करने के लिए she was ready। Now second, so first में आपका आया offensive and offense। Okay, now second, I dash with you on that point। I differ with you। differentiate भी होता है, यहाँ पे differ भी आ सकता है। I differ with you on that point। There is a lot of difference between an early riser and a late comer। So first two I have made you done, now rest two you will do। Okay yes, next, the words in the following pairs have the same spelling except for one letter but totally different meanings। The first one, okay सी, अलग अलग, जैसे कि स्पिट एंड स्प्लिट। स्पिट का मतलब है कहीं पर थूकना। ओके, हम लोग बोलते हैं ना डू नॉट स्पिट ऑन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स पर थूकना मना है। एंड स्प्लिट का मतलब है टू ब्रेक, टूट जाना। सो सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है, एल नहीं है यहाँ पे और यहाँ एल है, और इनसे पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। इसी तरह से आपको कुछ वर्ड्स जो हैं वो उनके मीनिंग फाइंड आउट करके फिलअप में करने हैं। सो यू कैन डू दैट। जैसे इसका मैं एक लिख देती हूँ, ही
tried to split the wooden piece. She wanted to spit the nasty food. Okay, now suitable words हैं कुछ, वो आपको उनके मीनिंग फाइंड आउट करके फिलअप में करने होंगे. अब नाउ सब आगे भी ऐसे ही है. एक टेबल गिवन है, उसमें आपको क्वेश्चंस दिए हैं. One girl and one boy, they both are having a conversation. Boy's name is Nicholas and girl name is Elena. So दोनों बात कर रहे हैं और एक टेबल दिया हुआ है. टेबल के अकॉर्डिंग निकोलस ने फर्स्ट क्वेश्चन एलिना से पूछा है, when does the first period start? So टेबल में वो टाइमिंग गिवन है. फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है at 8 o'clock. So first period starts at 8 o'clock. Second question, when do we have maths? Maths कब है? So maths is second lecture and it starts at 8:45 and ends at 9:30. So उस टेबल के अकॉर्डिंग टेबल में से देखकर ही आपको आंसर देने हैं. So the same way you have all the worksheet means your exercise part you can do. So now this is the chapter we have done. Throughout we have done, and you can also do all the worksheets by yourselves. Okay.